Assalamu alaikum. I am Professor Atiqur Zaman. I am working at Lahore Medical and Dental College, Ghurki Trust Teaching Hospital. I am doing as a specialty the pediatric and orthopedic surgery and the spine surgery. Telemedicine is basically the communication method by which you communicate with your patients with the help of the modern telecommunication devices. You can use the internet, phone, or any other device that can help in connecting with the patients who are far from your clinic or city. Telemedicine has progressed in orthopedic, especially in the era of the COVID. In Ghurki Trust Teaching Hospital, we have started 3 years back, before the COVID area, this telemedicine, and then in the COVID, its importance has increased, therefore its use is also increased in orthopedics. We use it for our patients who has been operated at our hospital, and then we can contact him in the follow-ups so that we can advise him in case of any problem. The different companies, they are now introducing the telemedicine softwares, and even they are donating the hardwares for the hospitals so that they can do the telemedicine practice. हर बंदे के लिए मुश्किल है, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है वो टेलीमेडिसिन सीख जाए। उसके लिए हमने तरीक़ेकार ये बनाया है कि अगर हमारे पास कोई मरीज़ आता है और हमने उसका इलाज टेलीमेडिसिन से करना है, तो हमारे पास एक स्टाफ है जो उस पेशेंट को बैठ के एक सॉफ्टवेयर उसके मोबाइल पे अपलोड करके और उसको प्रैक्टिस करा के भेजता है कि उसने इस पर कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपने एक्सरेज डालने हैं और कितने बजे उसने ये काम करना है और कितने अरसे बाद करते चले जाना है। उससे हमें फ़ायदा होता है। बहरहाल इसमें हर मरीज़ जो हमारे पेरिफेरी में रहता है उसके लिए मुश्किल है, लेकिन जितना हो सकता है वो कम से कम हमारा वर्कलोड जो फेस टू फेस पेशेंट के साथ है वो कम कर देता है। Our hospital is doing a lot of work on telemedicine. As I have told that we have started 3 years back this telemedicine in our hospital. It is difficult to do any treatment initially in the patient, but we have just started for our patients which has been operated in our hospital. They are coming from the far, and it is difficult for them to come for the follow-ups every 3 weeks for the next 3 to 6 months. So they can contact us on this telemedicine software, and then we can give them the advice. If needed, we call them to the hospital. Basically, this telemedicine, it has been boomed in the COVID area. The reason is that people are already knows that the telemedicine is important for the communication with the patient and for decreasing the workload on the hospital, plus the COVID it arises. Then in COVID, the people, they have trained automatically of using these devices, especially in the schools. They have a Zoom meetings. So in every children, they know how to do the Zoom meeting, how to use this software. Then they have purchased these softwares for their school or for their children's, and that's why it becomes easy. And the COVID helps us in transferring our knowledge or transferring our this experience on the telemedicine. No, this is not an alternative. This is just a help. We cannot diagnose the patient by using the telecommunication method. It might be that in the future such softwares they arise that helps us in diagnosis and in the treatment. But basically what we call the error. The error, it increases if you use only telecommunication for the diagnosis and the treatment of the patients. Therefore, we are now using it only for the patients which have been diagnosed, and then they only needs the follow-up advices. जब हम जो है वो पेशेंट्स को उसके घर के एनवायरनमेंट में देखते हैं तो हमें बहुत कुछ उसके बारे में पता लगता है। ऑर्थोपेडिक, क्योंकि मेरा ताल्लुक ऑर्थोपेडिक से है, तो हम उसके जो घर के एनवायरनमेंट, जब वो कोई वीडियो कम से कम सिर्फ अपनी वीडियो बना के भेजता है, वॉकिंग वीडियो, उससे हमें उसके सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस का पता लग जाता है। हम एक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपने मरीजों का इलाज मुफ्त करते हैं, तो इसलिए जो है वो हमें फिर अंदाज़ा हो जाता है कि हमने इसका इलाज ठीक किया है कि नहीं किया, हमने इसको पैसे खर्च करने हैं कि नहीं करने। पेशेंट्स को ज़ाहिर बात है आसानी होती है
और वो चाहता है कि मैं जो टेलीमेडिसिन मेथड से जो है वो अपना इलाज और अपना फॉलोअप कर सकूँ। पेशेंट्स को जो है वो टेलीमेडिसिन में जो प्रॉब्लम होती है कि इसको जो है वो प्रॉपरली प्लान किया हो, क्योंकि फिर पेशेंट को अगर ज़रा सा सर में भी दर्द हो तो वो फ़ोन करके ये चाहता है कि मैं उसका इलाज जो है उसी वक्त रात को 12 बजे पूछ लूँ। तो ये थोड़ा सा इसमें कम्युनिकेशन जो है वो फेस टू फेस बड़ी शुरू में ज़रूरी है, प्लानिंग ज़रूरी है, मरीज़ की ट्रेनिंग ज़रूरी है, ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। जिसके साथ हम ये करते हैं वो ज़ाहिर बात है कि टेलीमेडिसिन से खुश होता है। कोई आज की दुनिया में हम टेलीकम्युनिकेशन से अलग होके नहीं रह सकते, और कोई भी नई चीज़ जो आती है मरीज़ की मदद करने के लिए, उसकी जो है वो उसको जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, फिर उसके फ़ायदे और नुकसानात के मुताबिक उसको जो है वो फर्दर अडॉप्ट करना चाहिए।